अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर अकाउंटिंग। आज मैं आपको इनकम स्टेटमेंट, जो बेसिक इनकम स्टेटमेंट होती है, उसका फॉर्मेट, उसका स्ट्रक्चर और उसके अंदर होने वाली कैलकुलेशंस समझाने जा रहा हूँ। अगर आपको ये बेसिक इनकम स्टेटमेंट समझ आ जाती है, तो फिर जो नेक्स्ट एडवांस लेवल की इनकम स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसमें कुछ और चीज़ें भी हमने बाद में इनपुट करनी होती हैं फ्रॉम द गिवन डाटा, तो वो आपके लिए कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि एक बेसिक इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, ठीक है? कि उसके अंदर कौन-कौन से सेक्शंस होते हैं, उन सेक्शंस के अंदर फिर कौन-कौन से हम आइटम्स लिखते हैं। ये तो आपको पता होगा कि इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस दिया जाता है। ट्रायल बैलेंस हमें गिवन होता है, तो हम उससे जो है फिर इनकम स्टेटमेंट जनरेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको कभी भी इनकम स्टेटमेंट को समझने में और उसको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे ऊपर जो है बिज़नेस का नेम लिखा जाता है। जो भी बिज़नेस जिसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है, उसका नेम आता है। ये क्या चीज़ है? नेम ऑफ बिज़नेस। जिस इन बिज़नेस की हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, उसका नेम सबसे टॉप पे। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? उसके बाद हम ये हेडिंग देते हैं, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मई 2008। अब ये जो 31st मई 2008 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ दैट बिजनेस, ठीक है? और इस चीज को आपने ऐसे ही लिखना है, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। ये नहीं है कि सिर्फ खाली नीचे आपने डेट लिख देनी है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपने ये हेडिंग देनी है, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, या फिर आपने वो हेडिंग देनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये दोनों टर्म्स यूज होती हैं, इनकम स्टेटमेंट भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी। क्योंकि हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं किस लिए? कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का सिंपल सा फार्मूला आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ठीक है? प्रॉफिट हम किस तरह पहले कैलकुलेट करते थे? प्रॉफिट जो होता था, छोटी क्लासेस की मैथ में हम कैसे करते थे कि हमने कोई चीज़ बाय कितने की है और सेल कितने की है, उनका डिफरेंस, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, ठीक है? सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, तो हमें क्या आ जाता था? प्रॉफिट मिल जाता था। क्लास 4 में, 5 में आपने, 6 में इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे। एक्चुअली बेटा देखें, ये इसी कॉन्सेप्ट का, इसी इक्वेशन की ही बिग पिक्चर है यहाँ पे, इनकम स्टेटमेंट जब हम बिजनेसेस की बनाते हैं। हाँ, ये है कि अब इसके अंदर और चीज़ें भी ऐड हो जाएँगी, आपकी और चीज़ें भी इसके अंदर ऐड हो जाएँगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू से, ठीक है? रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है कि बिज़नेस को हमने जो अपनी गुड्स सेल की हैं, उससे हमें कितने पैसे जनरेट हुए हैं। यानी कि ये हमारे सेल्स होती हैं। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? रेवेन्यू या सेल्स, ठीक है? सेल्स यानी कि जो हमने चीज़ों को, अपनी जो सेल आउट किया है, गुड्स को, प्रोडक्ट्स को सेल आउट किया है, उससे हमें कितने पैसे मिले हैं या वो कितने की सेल हुई हैं। ये फिगर सबसे पहले लिखी जाती है, रेवेन्यू और सेल्स। क्वेश्चन में अगर रेवेन्यू दिया हुआ हो या सेल्स दी हुई हो, उन दोनों का एक ही मतलब होता है। उस फिगर को हम सबसे पहले इस सेंटर वाले कॉलम में लिख देते हैं। उसके बाद अगर कोई रिटर्न्स हो, सेल रिटर्न, तो वो माइनस करते हैं, माइनस, ठीक है? लेस लिखा हो, जहां भी लेस लिखा हुआ हो क्वेश्चन में, तो आपने समझ जाना है कि इसका मतलब क्या है, माइनस। तो इस सेल में से अगर हमने कोई चीजें अपने सप्लायर को वापस कर दी थी, उसको हम रिटर्न्स, सेल रिटर्न्स बोलते हैं, और उसको फिर हम सेल्स में से माइनस कर देते हैं। अच्छा, जो चीजें माइनस हो रही हैं, आपने ख्याल करना है कि उनको ब्रैकेट में पुट कर दें। अब मैंने इसमें से क्या किया, 95,700 में से 1000 माइनस कर दिया, तो आई गॉट 94,700। ओके, यानी कि ये हमारी नेट सेल्स हो गई। एक चीज का ख्याल रखना है बेटा, कि इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए आपने कोई अगर कैलकुलेशन की है इस तरह वर्टिकली, और उसका आंसर जो है आपने नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट करना है, तो आपने वो जो लास्ट फिगर लिखी होती है, उसी के सामने उस आंसर को लिख देना है, ठीक है? यानी कि अब ये अंडरस्टूड है कि ये 94,700 कहाँ से आया? ये इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से आया है। ओके, अच्छा, यहाँ हम ये जो कॉलम्स इसके अंदर 3 या 2 बने हुए होते हैं, समटाइम 2 बनाते हैं, उससे भी काम चल जाता है, 3 भी बना लेते हैं लोग, तो इट डिपेंड्स कि इसमें ये होता है कि लेफ्ट मोस्ट कॉलम में सबसे पहली वर्किंग की जाती है,
फिर उसका आंसर शिफ्ट किया जाता है राइट कॉलम में, और फिर राइट कॉलम पे वर्किंग की जाती है, फिर उसका आंसर शिफ्ट किया जाता है द राइट मोस्ट कॉलम में। अच्छा, अब कोई ऐसी फिगर जिस पे कोई भी वर्किंग नहीं होनी, उसको हम डायरेक्ट इधर लिख देते हैं लास्ट वाले कॉलम में। जिस पे अभी एक वर्किंग होनी है उसको मिडल वाले, और जिसके ऊपर अभी दो वर्किंग्स होनी है, यानी कि पहले यहां से आंसर मिलेगा हमें, फिर उसका आंसर हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, फिर आंसर आगे शिफ्ट कर देंगे। तो ये इन कॉलम्स का ये पर्पस होता है। ओके। अच्छा, अब ये हमने सेल्स में से सेल रिटर्न, यानी कि ये हमारा एक ब्लॉक, पहला ब्लॉक कंप्लीट हो गया। ये हमारा रेवेन्यू का ब्लॉक या सेल्स का ब्लॉक होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक हेडिंग देनी है, उसका नाम आपने लिखना है लेस सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल का क्या मतलब है कि ये चीजें जो हमने 94,700 की सेल की हैं, ये हमें कितने में पड़ी, ये गुड्स, इनके ऊपर हमारी कितनी कॉस्ट आई, ठीक है। यानी कि उनकी बाइंग कॉस्ट और सारी ये इस तरह की, कि ये चीजें जिनको हमने सेल आउट किया है कितने का, 94,700 का, वो हमने बाय कितने की थी। अब हम वो कॉस्ट फाइंड करने करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस में जो कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं इसके अंदर, बड़े बिजनेसेस में, तो इसलिए इसकी वर्किंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है। परेशान नहीं होना, ये हमारा सेकंड ब्लॉक है, कॉस्ट ऑफ सेल का ब्लॉक। सिर्फ ये कॉस्ट ऑफ सेल के ब्लॉक में आपको कुछ चीज़ें बेटा याद रखनी होती हैं, ठीक है। अब इस ब्लॉक के अंदर आप कौन कौन सी चीज़ें आनी हैं, हम उनको वन बाई वन देखते हैं। अच्छा, ये जो लेस कॉस्ट ऑफ सेल है, देखें इसके सामने कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हेडिंग है। कोई भी हेडिंग आएगी मैं उसको क्या कर दूंगा, मैं उसको ऐसे हाईलाइट करूंगा। फिर इसके ब्लॉक के अंदर ये चीजें आ रही हैं। अच्छा, अब ये देखें, इस ब्लॉक के अंदर जो चीजें आ रही हैं वो थोड़ा सा इंडेंट करके लिखी हुई हैं। इंडेंट का मतलब कि यहाँ से स्पेस छोड़ी हुई है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो जहां तक इसके आइटम्स आ रहे हैं तो वो ऐसे ही चल रहे हैं। अच्छा, तो ये तो था इसका फॉर्मेट और स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री, अब ये क्या चीज होती है ओपनिंग इन्वेंट्री? ये वो गुड्स होती हैं जो पिछले साल बच गई होती हैं, सेल नहीं हुई होती, ठीक है। जो अनसोल्ड, इसको मैं यहां लिख देता हूं बेटा, अनसोल्ड, अनसोल्ड गुड्स ऑफ प्रीवियस ईयर, जो कि हमने खरीदी तो बाय तो पिछले साल की थी, लेकिन वो सेल आउट नहीं हो सकी, तो वो दोज वर लेफ्ट इन द स्टॉक्स। तो दिस इज कॉल्ड ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी और इस साल की हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है। देन व्हाट वी डू आफ्टर ओपनिंग इन्वेंट्री, वी राइट परचेजेस and we place a plus sign here before the purchases. Okay, what we do, we add purchases into the this opening inventory. After writing purchases, then if purchases returns are given in the trial balance, then they will be subtracted now. Okay, after purchases we have to subtract purchase return. This 500 was purchases return and we are subtracting it from the purchases. Okay, we are getting 64,500. uh, then after this calculation, if owner has taken some goods for own use, means if there is drawings of goods, this is, what is this, drawings of goods, and if this is also given in the trial balance, then it will also be subtracted. Drawings of goods was given 300, so we are subtracting it also. Remember, cash drawings are not to be written here, only drawings of goods are to be subtracted. Okay, then there is an other item in the cost section to be included, that is carriage inward. Carriage inward on goods means this is our cost that we spend to bring the inventory to our place. Okay, that the delivery charges, shipping charges, this is called carriage inward. This will be added, this is added into the cost of sale. Okay, after doing this all calculation, we get this answer 65,700, and we write this answer in the second column. After that, if and definitely a closing inventory would be given in the question.
it is given outside the trial balance. Okay, it's not included, closing inventory is not included in the trial balance, but it is given outside the trial balance. So you have to subtract closing inventory. Now this is the inventory that is left, that was not sold during the year. Okay, so in this year it is closing inventory, and in the next year it will become opening inventory, as we have shown here, opening inventory. This it means this was definitely the closing inventory of the previous year. Now this year's closing inventory is 7600, so this will be subtracted, and as we will open next year books, this 7600 will be our opening inventory in the next year. But here you just have to learn that closing inventory is subtracted in the cost of sales section. Okay, after doing this all calculation, we are getting the final answer, that is $65,200. This is the answer of this whole block. This is the whole block of cost of sale section. Okay, and we are getting a final answer of this block here, and this is this one, 65,200. Now we can see the things, the goods that we sold for 94,700 up. Okay, those goods cost us 65,200. Okay, means we bought those goods for 65,200, that we sold for 94,700, and now we will subtract these two. 65 to 200 will be subtracted from this figure. Okay, I am marking it with the subtraction, and you can see we are left with 29,500. This is our gross profit. Gross profit, the first complete figure of our income statement is gross profit. Gross means here that profit that is not final. Gross mean not final. Let's see why it's not final. Because some other expenses are still to be considered, that are incurred in doing the business. We have to subtract those expenses also from this gross profit. Let's see what are those. And there may be some other incomes as well. Okay, there may be some other expenses, and there may be some other incomes as well in our trial balance. So if there is any other income, you can see here they have written add discount received. This discount received is our other income. There can be one, two, three, four, many other incomes given. Okay, if any other incomes are there, you will add those other incomes in the gross profit figure. So discount received was given in trial balance as 400. It is being added in 29,500, and we are getting 29,900. Now you do not have to label this figure. Okay, see, there is no label here. They have written, you will leave it blank on the detail sides. Keep this figure as it is, but do not make a line under this figure, because this figure is to be included in the coming calculations. Okay, now we see that some expenses are written, and they have written less only here with the discount allowed. This less is not only with the discount allowed, but all the coming expenses. This whole block will be added first, and then it will be subtracted from this figure. Okay, so here we can give a heading, that is uh, less expenses. Okay, we can give less expenses heading here. We can write less expenses at this place, less expenses, and this will be our heading. Okay, and we can underline this heading. Instead of writing one less over here, we will write less expenses at this place, and then we will list all the expenses. What are expenses?
expenses are the cost of the facilities that we used for running our business. For example, wages, general expense, property tax, discount allowed. Okay, there can be salaries, there can be light and heat expenses, there can be traveling expenses, many expenses. This list can be long. Okay, so you have to write these expenses over here, and when you list all the expenses, they all will be added. Okay, now we have added all these four expenses because on we are given only four expenses, and their sum is coming here 15,500. Now this is the figure we are getting from up, and this is the total expenses. We will subtract these expenses from this figure. Okay, this figure will be subtracted now. Remember, total of expenses is to be subtracted, remember this rule, from this upper figure, and now we are getting the remainder 14,500, and this is they are calling it profit from operations. This is profit from operations. And then they have subtracted another figure, less loan interest 500. You can also add this loan interest at this level at IGCSE and O level. You can write loan interest in your expenses section as well. Okay, but in the next, when you will be in A level, then you have to write your financial expenses, financial cost separately. Here you have both options. You can write it after profit from operations, or you can add this interest in the upper list of expenses. Okay, then this expense also being subtracted from this 14,500, and we are left with 13,900. This is our profit for the year. This is also called net profit. Net profit, profit after operations. Okay, from operations, then subtracting loan interest, and now this is our final figure of profit. So students, this is the all about a basic income statement. This is a structure and a working of a basic income statement. All other income statements that you will make after this will be advanced, will have more items in those. For example, here provision for depreciation is not given. Here provision for doubtful debts is not given. Okay, here accruals and prepaids are not given. First, you should know the basic structure of income statement. Then later you can easily add the other items that will be coming later in the coming chapters in this basic income statement. That if you know that how to make the basic income statement, then later it will not be difficult for you to how to put the other items in the income statements. So these are the compulsory blocks, compulsory sections that are to be shown in an income statement. Till here you can see till gross profit. This is called this section, till gross profit section. I can uh, mark it, this one. This section is called trading section. What it is called? Trading section of an income statement. And the remaining one after gross profit is called profit and loss section. Okay, this is also another point that you should note, that where the trading section ends, it ends at gross profit figure. Okay, after that profit and loss section comes, where we write other incomes, add the other incomes into gross profit, and subtract expenses from the gross profit final figure. Okay, so that's all for this basic income statement format, structure, and its calculation. If you have any questions, please write your queries in comment section. And if you like the video, please subscribe the channel and press bell icon so that you can get the coming videos. Thank you.